future of e-commerce and retail in India, digital ecosystem, social. So, uh, मैंने आपको ये बताया था सोशल कॉमर्स, वॉइस का इंपॉर्टेंस बताया था, चैटबॉट्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर तो ऑलरेडी इट इज हैपनिंग, वीडियो कॉमर्स एंड लाइव कॉमर्स. सो लाइव कॉमर्स एक्चुअली वीडियो कॉमर्स ही है. live shopping, also known as live streaming shopping, is already growing, and India's live shopping industry could grow to $5 billion by 2025. So live commerce has a huge potential, और ये already it has started to happen, और बहुत सारे influencers मिल जाएंगे आपको e-commerce साइट पे जो कि प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं. लाइव प्रोडक्ट डेमोज होती हैं और इन्फ्लुएंसर्स उन प्रोडक्ट्स को डेमोस्ट्रेट करते हैं और सेल करते हैं. मैनेजिंग ई कॉमर्स इन न्यू फ्यूचर. तो यहाँ पर ये इसमें बता रहे हैं कि हाउ ब्रांड्स कैन स्पेंड लेस एंड अक्वायर मोर कस्टमर्स. क्रिएट अ ब्रांड मेजरमेंट स्ट्रेटजी. बोथ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग आर वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट्स. टू रिड्यूस एक्विजिशन कॉस्ट, अ वैरायटी of marketing and sales channels should be used at every point of contact with customers. Emphasize differentiators and distinctive values. सो मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और ऑब्वियसली डेटा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अगर आप कर रहे हैं, सो विच मोस्टली ब्रांड्स आर डूइंग नाउ, यू कैन एक्वायर मोर कस्टमर्स इन लेस टाइम. हर एक डेटा पॉइंट को आजकल कैप्चर किया जाता है थ्रू एनालिटिक्स, एंड विच हेल्प्स इन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. So key takeaways क्या है? Consumers are demanding personalization. Personalization isn't a magic bullet for customer engagement. Brand communities are building customer loyalty. Consumers continue to demand personalized shopping experiences. Brands innovate with first-party data, but personalization isn't enough to create long-term relationship with customers. Brand communities become key to building trust and brand equity and improving customer retention. So what's next? Digital ad tech supports ad campaigns across TV, mobile, or desktop. It also helps marketers manage ad campaigns across platforms, from pay-per-click ads on social search engines to display ads on publishers' website and apps, and even ads on social media. Digital ad tech covers any type of paid online advertising. Ad tech helps track campaign results while leveraging the power of data to support machine learning capabilities, using audience data to help create more personalized ads over time. For example, if a user is always searching for white sneakers on search tools, digital ad tech will learn that user's habit and start pushing advertisements for white sneakers to them. Over time, they will also recognize the brand that specific user likes, feeding them the content specific to that brand. It's all accessible in one centralized hub, so advertisers can easily monitor and manage their ads. Here are some upcoming trends for digital advertising technology. So basically ad tech के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ad tech कैसे हेल्प करता है. कैंपेन यूजर बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है, and through analytics we know, and ads could be served to the consumer looking for a specific product or service. So ये हमने ट्रेंड्स एक्चुअली देखे थे. अब इधर इसमें जो देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर प्रोग्रामेटिक. सो So at the very core of programmatic is automation and large amounts of data. With the emergence of artificial intelligence, which is built to automatically handle large sets of data, the programmatic ad space is quickly evolving. Ads are becoming smarter and more immersive and engaging than ever.
So programmatic uses artificial intelligence, or artificial intelligence requires a lot of data to show results. So here now, from now on, in paid media or in social media, the importance of data has increased many folds. Programmatic advertising completely data के ऊपर डिपेंडेंट है. So otherwise जब तक मशीन लर्न नहीं करेगी उस डेटा को, it can't a brand cannot drive data do data driven marketing. So AI encourages personalization in programmatic advertising, which is key to reaching audiences where they are. So अब इसमें navigating a cookieless world. Every time Google decides to further postpone the removal of third-party cookies, which is now slated to happen in 2024, advertisers may feel like they have gained some bonus time, but don't keep banking on further delays, because time will eventually come. And the best way to ensure you're not struggling then is to be prepared. Third-party cookies have already been deprecated by major internet browsers and severely restricted by Apple and other technology platforms. So third-party cookies, so we should already bury the idea of third-party cookies and start looking at first-party data, the importance of first-party data. और brands को already first-party data की importance समझ में अभी तक आ जानी चाहिए. So benefits क्या है cookieless future के? In truth, the cookieless future is not bad at all for advertisers. There are advantages to it. For one, it increases privacy, lower the risk of identity theft. It can give brands a lot more visibility into who their customers are and where they are coming from. Since cookieless tracking solutions leverage AI to collect the user data, they give companies a greater ability to understand and use the data collected. Those who know how to take advantage of this will be able to tap into the final details, potentially converting many more users into paying customers. So it's a blessing in disguise कि थर्ड पार्टी कुकीज जा रही हैं और फर्स्ट पार्टी डेटा की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है. तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. Getting zero party data, there's also zero party data, which is information that consumers willingly share with a brand, publisher, platform, and so on. This may include purchase intentions, personal context, communication preferences, and how the individual wants the brand to identify them. The most effective strategy to gather zero-party data is to request information in exchange for something of value. A survey, a personalized product suggestions, or free resource like ebook could accomplish this. Actually, मैंने अपने डेटा वाली वीडियो में ये कवर किया है the importance of zero party data and first party data. अलग अलग टाइप्स के डेटा कौन से होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज, सारा मैंने कवर किया हुआ है. और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा. So how to prepare for a cookieless world? तो थर्ड पार्टी कुकीज क्योंकि अब जा रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू गार्टनर, देयर आर गार्टनर अगेन रिसर्च फर्म है, देयर आर 3 things advertisers should keep in mind as they prepare for cookieless world. First step is to prepare for a sustained disruption. This means being ready to navigate the overlapping effect of identity and privacy changes. तो फर्स्ट स्टेप हमारा cookieless world के लिए तो प्रिपरेशन है. फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर सस्टेन्ड डिसरप्शन. Second step is to rethink ad measurement practices. Different ways of collecting data means there needs to be different ways to measure the ad effectiveness. Third step is to adapt to a walled garden world. Prepare to allocate more advertising budgets to brands that require logins and have massive footprints, such as Google, Facebook, and Amazon, and expect to see more direct media buys with platforms and publishers instead of cross-publisher programmatic ad buys. तो वॉल्ड गार्डन जो हम कह रहे हैं, द वॉल्ड गार्डन एक्चुअली बिगर ब्रांड्स लाइक गूगल, फेसबुक और अमेजन हो गया, जहां पर आपको सारा का सारा आपका
कह लीजिए ट्रांजैक्शन कह लो, या वो पूरा जो प्रोसेस है वो उनके सिस्टम से बाहर नहीं जाता है, वो वहीं पर रहता है, वहीं पर कंप्लीट होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर ऐप उनकी यूज कर रहे हैं तो फोन भी उन्हीं का यूज करेंगे, सो इट्स लाइक दैट। सो सो इनको इसीलिए वर्ल्ड गार्डन कहा गया है। एंड there can be a lot of discussion about this walled garden and open internet, but this would be out of scope of this video. So advertisers के लिए the cookieless future is an opportunity for brands to undo their bad habits and start with a clean slate by focusing on what is important and truly yields results rather than casting a wider net, making impressive but doesn't add value. So it has cookieless future के अपने advantages हैं. So this we have already discussed कि voice will further shape programmatic. Programmatic audio advertising uses programmatic audio specific publishers like Spotify, Gaana, Jio, Sawan, and Hangama to automate the selling and insertion of advertisement in audio content such as podcast, digital radio, and streaming music services. This audio content streams on various devices including computers, smartphones, over-the-top TVs, and smart speakers. Like other programmatic ad channels, audio advertising allows you to overlay different targeting strategies to reach appropriate geolocation target audience depending on your digital ad strategy. So according to Spotify, ads with a direct call to action had a CTR 3 times higher than those without one. So Spotify एड्स जहाँ पर डायरेक्ट कॉल टू एक्शन था उसमें 3 times ज़्यादा CTR आए थे एज कम्पेयर टू द वन विदाउट which doesn't have call to action. So that we know already actually. So at the least, you can tell the listener to tap to find a place or visit my website. Audio advertisements, unlike television and display commercial, do not rely on visual engagement. As a result, digital audio can reach consumers in a manner that visual advertising can't. Music evokes feelings, and listening to podcast might be linked to speaking with a buddy. So audio advertising के अपने benefits हैं, ये आगे जाके grow करेगी, and again programmatically आप target कर सकते हो audio advertising का use करते हुए. ओमनी चैनल के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स कंटेंट एक्सेस करते हैं अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू आउट द डे, स्विचिंग अमंग डेस्कटॉप, मोबाइल एंड इंक्रीजिंग CTVs. सो ओमनी चैनल स्ट्रेटजी इज द ओनली वे आउट. अब कंपैरिजन इधर किया हुआ है ओमनी चैनल एंड मल्टी चैनल में. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओमनी चैनल मार्केटिंग इज नॉट सेम एज मल्टी चैनल मार्केटिंग. साउंड दोनों टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर लगती हैं. मल्टी चैनल एंड ओमनी चैनल इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट देन ओमनी चैनल इज मोर कस्टमर सेंट्रिक, वेयर एज मल्टी चैनल जो स्ट्रेटजी होती है वो चैनल टारगेटेड स्ट्रेटजी होती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओमनी चैनल मार्केटिंग नॉट सेम एज मल्टी चैनल मार्केटिंग. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज. While a multi-channel marketing strategy advertises across different channels, each channel functions as independent silos. तो silos में work करती है multi-channel marketing, whereas omni-channel strategies set up more as a network with customer in the center. अगर हम इन diagrams में देखें, ये multi-channel marketing है और ये ओमनी चैनल मार्केटिंग है. तो ओमनी चैनल में कस्टमर सेंटर में आता है और बाकी सारे चैनल्स उसके इर्द गिर्द हैं. सो ओमनी चैनल में स्टार्ट विद द कस्टमर एंड इंटरेक्ट्स विद बिटवीन चैनल्स फॉर सीमलेस एक्सपीरियंस, वेयरएज जो मल्टी चैनल मार्केटिंग होती है उसमें साइलोज में वर्क करता है बिजनेस. वेब पे अलग, मोबाइल पे अलग, सोशल और स्टोर पे अलग. स्टार्ट विद द कंपनी एंड मूव्स आउटवर्ड्स टू चैनल्स. What next? Future of omni-channel marketing case study.
सो आई विल रीड आउट इस रिपोर्ट में कंक्लूजन में क्या कहा गया है. द डिजिटल मीडिया स्पेस इज इवॉल्विंग फास्ट. टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे इंडस्ट्रीज ऑपरेट, and this includes advertising. Consumers are no longer content with traditional methods of engaging with brands. They expect more, especially from their favorite brands and brands that will become their favorites. Marketers need to be agile and redefine the way the customers consume content. At the very least, they should implement new strategies that move alongside changing user habits. We are also going to see the end of third-party cookies become reality very soon. So time is running out for brands who have yet to think their advertising strategies. They should already be focused on learning the best ways to gain first-party data or even zero-party data and designing a future-proof digital advertising strategy. सो हमारा जो भी इस रिपोर्ट में ओवरऑल डिस्कशन को एक कंसाइज वे में कंक्लूजन में यहाँ पर सब सारे पॉइंट्स हैं. सो अगर आपके पास टाइम नहीं होगा पूरा टू गो थ्रू द कंप्लीट रिपोर्ट, देन यू कैन गो थ्रू दिस समराइज्ड कंक्लूजन. सो दिस विल आल्सो गिव यू सम आइडिया कि क्या इसमें हो रहा है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में, हाउ इज इट इवॉल्विंग, व्हाट इज द फ्यूचर लाइकली टू बी. So additionally, the privacy concerns continue to rise in our increasingly digital world. Brands should take personal data protection bill regulation seriously. Organizations that can remain creative while keeping the customer's data and privacy secure will stand out and surely reap the benefits in long run. Security is paramount. The growth in omnichannel marketing will further blur the lines between digital and non-digital advertising. As brands redefine the way they connect with consumers across digital, mobile, OTT channels, marketing budget may shift. As we navigate the future of advertising, brands should also look at new and exciting ways to reach consumers, such as through voice-enabled devices, AR and VR. I believe that this report will be very useful for the students of advertising और जो digital already practice कर रहे हैं. People who are not aware of the benefits of programmatic advertising and how it's going to grow and evolve in the future, क्या potential है उसमें, career opportunities क्या हैं. So इस रिपोर्ट से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ट्रेंड्स जानने में आगे की कि क्या हो रहा है और कैसे ग्रोथ हो रही है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की.